Coming to the colleges, coding seems to be the new JEE and FANG the new IITs. People from different departments, different backgrounds starts to code to look for their dream job in big tech companies, especially targeting the FANG. For many of them, the coding journey initially seems to be rocket science as the learning curve goes really slow. Confused, they look for different sources to learn the coding part quickly, from YouTube to Google, even paid courses and Telegram channels. Even after that, when things don't work properly, they get frustrated and the motivation goes down really quick. This is the case with many of the people and exactly happened with me also. So if you are here starting your coding journey or you're not able to level up, this video has something for you. Don't worry, it won't be this complex, but it will make your coding journey really smooth. Hello everyone, welcome back to the channel. This is the very first video from the playlist called From Zero. So in this playlist we are going to see different journeys of different people from different backgrounds, and all the journeys will be from the day when they had started coding and they had zero knowledge of coding. And right now they are sitting in big tech companies or having offers from big tech companies, especially in this placement season. Apart from that, we'll also be discussing about things like resources and from where to refer, from where to learn, these kinds of things. Apart from these, some kinds of questions like which we have initially when we are coding and struggling with that part. Like if you are not able to get a question, or if you are not able to solve that question in 2 to 3 hours, or even after trying a day, then what should you do? How should you approach that question? Or when you need to see the solution? What things do you need to have keep the note of while seeing the solution? How do you need to do revision? These kinds of things. Also, I'll be giving you multiple perspective. Not only I'll be telling I was doing this and that, but apart from that, I'll be having many people who will suggest their own ways, and you'll get to know a lot of things how that a single thing can be tackled by different people in such a different way. My experiences also. And I have also a quite different experience. All the experiences will be quite different, quite unique, and mine is also unique in its own way. So like I joined the college as a mechanical student, and initially what I thought is after like getting graduated from here, I'll maybe go to some government sector, maybe some PSUs or like in other government services. But because I knew that coding was something that I'm not able to do, or I was really struggling with that part. And even after what happened, I learned to code, then there was a time when I was not able to level up. So things became quite frustrating, but right now it's done. And I'll tell everything about my story in some another video. And apart from that, I'll also like to add one more thing is that coding for placement thing is actually not that tough. Initially, it may looks hard for many of the people because there's a lot of things in this to cover, and apart from coding, there's a lot of other things which you need to prepare for interviews, like other subjects, including computer networks, operating system. But there's especially for freshers, you don't have to go much deep in that, and there's very standard things which you will be asked. So it's actually not that tough for getting placement and all. But on the other side, when you go for a competition, good competitions like ICPC and all, things may be a little challenging on that part. But to be honest, if you are here and looking for something like looking for a kind of job approach, then coding won't be that tough for you. Now coming to the very obvious questions, why this coding seems to be hard? Agar hard nahi hai, to why it seems to be hard, and why everyone tells that coding is really tough, or why initially you feel it's a rocket science kind of thing. So the very first thing, or very standard mistake which most of the people do is that कि वो कुछ basics करते हैं and then they go to some kind of platform, hacker rank और या फिर कोडशिप पे चले जाते हैं, and वहाँ जाकर कुछ टेस्ट या फिर कुछ कॉम्पिटिशन जो भी है वो देंगे, and in fact अगर वो 5-10 कॉम्पिटिशन जो भी उन्होंने दिया उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है तो the motivation goes down really quick. And in fact this is what happened with me also. Like ऐसा होता है कि तुमने लैंग्वेज को पूरा जाना भी नहीं है, मे बी यू डोंट नो अबाउट एसटीएल क्या होता है, एंड देन यू गो एंड सिट ऑन दैट प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन नोज, मोस्ट ऑफ द पीपल नोज, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि सारी चीजें, उनके बीच में तुम बैठकर टेस्ट दे रहे होते हो एंड यू एक्सपेक्ट कि थिंग्स विल गो बेटर, लाइक थिंग्स विल गो गुड.
तो ऐसा होता नहीं है. एंड देन अगेन अगर 5-10 टेस्ट में ऐसे हो जाए तो मोटिवेशन डाउन होते जाता है, द थिंग्स रियली बिकम फ्रस्ट्रेटिंग. तो दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोडिंग हो भी जाए, मीन्स यू गेट द क्वेश्चन, बट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट कि तुमने सोल्यूशन जो लिखा है दैट इज नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड बिकॉज द सोल्यूशन सेल्फ इज वेरी अनऑप्टिमाइज्ड. तुम्हें कोड लिखनी थी n log n में एंड तुमने लिख के रखा है उसको n स्क्वायर में. सो तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम इसको कैसे सोच सकते हो. व्हाट आर थिंग्स आर देयर, इसको अगर सॉर्ट करे ना करे, दीज थिंग्स आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच यू आर नॉट एबल टू थिंक बिकॉज यू हैव नॉट डन क्वेश्चंस लाइक दैट. और तुमने उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, बट यू आर गोइंग एंड सिटिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म. सो दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक एंड वेरी स्टैंडर्ड मिस्टेक्स विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि यार एक तो मैंने लेट स्टार्ट की थी एंड उसके बाद भी आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. दीज आर द मिस्टेक्स विच लाइक यू कैन अवॉइड. दूसरी चीज जो हमारी कोडिंग को टफ बना देती है ओवरऑल और इज दैट कि हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि इनफैक्ट व्हाट आई डिड और व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट कि मैं यूट्यूब पे कोई भी रैंडम वीडियो देख रहा होता हूँ, रैंडम प्लेलिस्ट खोल कर रैंडम वीडियो देख रहा होता हूँ. एंड इवन आई डोंट नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो कि यार मैं ट्री की वीडियो, एक बार मुझे याद है कि मैं ट्री की वीडियोस देख रहा था एंड आई डिडंट इवन न्यू रिकर्जन. तो मुझे रिकर्जन कुछ पता नहीं है, बट मैं ट्री की वीडियोस देख रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा है. बार बार वीडियोस देख रहा हूँ तो भी समझ नहीं आ रहा है. सो लर्निंग थिंग्स इन एन अनस्ट्रक्चर्ड वे was my biggest mistake. And इफ यू नो द ऑर्डर कि किस ऑर्डर में पढ़ना है, सारी चीजें अगर तुम्हें पहले से पता है तो शायद ये तुम्हें उतना भी टफ ना लगे. एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि इस सीरीज के बारे में मैं बताता हूँ. तो इस सीरीज में वी विल बी सीइंग ऑल द जर्नीज ऑफ डिफरेंट पीपल. आई विल बी इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो बताएंगे तुम्हें एंड किस ऑर्डर में तुम्हें पढ़ना चाहिए, किस ऑर्डर में उन्होंने पढ़ाई की है और बेसिक उन्होंने कैसे इस चीज को टैकल किया है. राइट नाउ यू आर अ बिगनर और वट एवर स्टेज यू आर, तो they have achieved something which you want or which you are striving for. So the order which they have prepared, किस तरीके से पढ़ाई की है, कैसे गाइडेड वे में पढ़ाई की है, कौन सी गलतियां थी जो उन्होंने की है and which you can avoid. So रिवाइज किया है तो कैसे किया है, कब करते थे रिवाइज, नोट्स बनाया है तो कैसे बनाया है, बेसिक्स कब कवर किया, बेसिक्स कितना कवर किया बिफोर गोइंग टू एनी प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के बाद भी कौन से प्लेटफॉर्म बिगनर्स के लिए अच्छे हैं और लेवल अप कैसे करें, और अगर कुछ कभी दिक्कत आई है तो व्हाट हेल्प्स यू इन गेटिंग मोटिवेटेड. और इसके अलावा कॉलेज की स्टडीज, हाउ टू मैनेज कॉलेज स्टडीज विद कोडिंग पार्ट एंड अदर थिंग्स लाइक स्टैंडर्ड मिस्टेक्स विद 2-3 तो मैंने ही बता दिया इस वीडियो में. तो वैसे ही कुछ स्टैंडर्ड मिस्टेक्स है जो सब करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ किया होगा, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. एंड होप दिस विल मेक यू you will be learning from others, mistakes of others, and तुम्हारी coding journey थोड़ी smooth हो जाएगी. At last I'll be telling you that same thing कि coding actually is not that tough if you do it in a guided way. और अगर तुम दूसरों के mistakes से कुछ mistakes को avoid कर पाते हो तो for getting a job coding is not that tough. So I hope you are excited for the upcoming stories, and if you are, please subscribe to the channel. I hope these things will make sense to you or will help you in some or the other ways. And yeah, so that's all about this video. Thank you for watching this video, and let's catch up in some other video.